my channel. So today is 5th of March and a new journey begins again. So we reached Lucknow on 3rd March and we took a break on 4th, and now we'll be heading towards Jim Corbett from Lucknow. So चलिए हमारे साथ आपको दिखाएं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। लखनऊ से जिम कॉर्बेट जाने में अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर्स लगते हैं एंड ऑफ कोर्स सम ब्रेक टाइम आल्सो, एंड इट्स 6:45 इन द मॉर्निंग। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय द इवनिंग वी विल रीच जिम कॉर्बेट। तो चलिए आपको रास्ते में दिखाऊंगी लखनऊ से जिम कॉर्बेट का रास्ता और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं एंड हाउ गुड इट इज़ टू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम लखनऊ टू जिम कॉर्बेट। सो फ्रेंड्स, इट्स 7 o'clock right now and we are starting our journey, and we'll keep you updated as we move forward towards Jim Corbett. So friends, we got delayed due to some personal reasons, so now we will be starting our journey at around 9:30. So we're passing through Malihabad, so you can see many mango orchards. So Malihabad is famous for Dasheri mangoes, which are sent all over the world from here. So a lot of nurseries on the way. So ये सब जो आप देख रहे हैं ये आम के बगीचे हैं, एंड और 1-2 महीने में बहुत अच्छे आम आएंगे यहाँ पर। मई तक इसमें बहुत सारे मार्केट में आम आ जाएंगे जो यहीं से जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस रास्ते पे आ रहे हैं तो आप घर से खाना ज़रूर लाइएगा। बहुत ही कम अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं इस रास्ते में। अगर आप ढाबे, बहुत ही छोटे छोटे ढाबों का खाना खा सकते हैं तो ठीक है। So right now we are at this Sermau Dhaba and somewhere after Hardoi, and ये थोड़ी साफ़ सुथरी जगह है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं, और they have washrooms also. So friends, अगर आप कभी जिम कॉर्बेट जा रहे हैं लखनऊ से तो यहाँ ज़रूर रुकिएगा, सहरा माऊ ढाबा, और इट्स ए वेरी न्यू ढाबा। और हमने सोचा था कि नीट नहीं होगा, बट इट्स वेरी नीट, बहुत ही साफ़ सुथरा, खाना भी बहुत ही अच्छा, बट थोड़ा स्पाइसी है। तो अगर आप माइंड नहीं करते हैं स्पाइसी खाना, सो यू कैन कम एंड हैव फूड हियर, एंड इवन द वॉशरूम्स आर वेरी नीट एंड क्लीन, सो आप इस ढाबे को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फूड कोर्ट्स एंड कैफ़े कॉफ़ी डे और डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, तो यहाँ इस रास्ते पे आपको शायद ही कोई मिलेगा, बट ढाबे बहुत सारे हैं एंड कुछ ढाबे नीट एंड क्लीन हैं, तो यू कैन ट्राई इट आउट।
So we'll be staying at Karma Sita Bani, which is near Jim Corbett, and the distance between Lucknow to Karma Sita Bani is around 426 kilometers, and we have almost finished more than half of it, crossed Bareilly, and now we are on NH 530, and another 4 hours and we will be in Karma Sita Bani. After crossing Bareilly, the roads are much better. So this is a 4-lane highway and the roads are good. Before this, the roads were not very good, but still manageable. So to reach our Karma Sita Bani resort, we have to cross a jungle and the night adventure begins. So we are passing through the jungle to reach our Karma Sita Bani resort, and we have been told by the guards to watch out for elephants, and in case we see an elephant, we must not disturb that elephant. We were told by the guards to keep a safe distance from the animals, and especially elephants, and we must not disturb them if we see them. And we have to cross this area to reach our resort, so hopefully we will not be seeing many animals because it's quite dark and spooky. Actually, we are going through the jungle and there is no lighting anywhere, so the car lights are the only lights we have here. So we have passed by some deers, and इस एरिया का नाम है कोसी वन क्षेत्र. This seems to be a very adventurous trip because neither we are supposed to stop or get out of our car and make no noise if we see any animal. So we have to travel through this jungle, almost half an hour through this jungle to reach our resort. It's an actual jungle resort. So there are some deers here. And a nilgai, I think. Reach Karma Sita Bani resort after 10 hours of journey from Lucknow. So we are at the reception. So after warm welcome, we headed towards our rooms for some rest. So after a long journey of around 10 hours or maybe more than 10 hours, 10 and a half hours, we have reached Karma Sita Bani resort from Lucknow. It's a beautiful resort. It has a swimming pool, it has a play area for children, it has a Three Monkeys club and a restaurant. So I'll be taking you around the resort tomorrow, and also tomorrow we'll be going for our jungle safari, which is arranged by the Karma Sita Bani resort. Hope you enjoyed today's vlog. Till we meet again, stay happy, stay safe and keep enjoying life. So stay connected with me, because in my coming vlogs you are going to see more of family fun
and adventure. So see you in my next vlog.